তাকে কোনো স্টেপস লয় না যেন ফ্লাড হইলে মানুষের কষ্ট হইতো না মানে ও গৌহাটিত বইয়া লম্বা লম্বা স্পিচ দেওয়া এগু জেনারেল পাবলিকর লাগি কোনো বালা নাই and it is very sad actually the government gives big statements in newspaper television nothing is being done nothing ever gets done every year it is the same story why the government has to ask the ruling party has to ask and reply to the people the poor people of Assam are suffering every year why don't they take help of some very big experts in this line they are showing crores of expenditure on floods and all of it is where it goes no one knows it has never benefited the general public flood is not only yesterday's problem it's been ages but when the flood comes ministers give big statements and thereafter they vamos they just go out of this world very pathetic poor people are suffering I feel the government of Assam has to take a deep look into its chest and see what are the hidden factors which is not allowing any support or help to the people of Assam. Our ministers give big talks, big lectures on TV and the moment the flood recedes they also go away from here. Very unfortunate and very pathetic. Sir, বানপীড়িত সকলে সহায় সহযোগ পোৱা নাই চৰকাৰী ফালৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী See, after flood or during flood, a lot of money comes from all corners. 2.5 days is a rule, sir. Within the rule, they know the rule. Yes, sir. What I'm trying to say, all the money goes into the pockets of the powers be, doesn't reach the public. So, this is going to be the story of Assam till someone honest comes and takes power. Sir, We are praying. স্যার বিলাসীপাড়াত আজি সর্ববৃহৎ উচ্ছেদ চলি আছে কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত বৃহৎ সংখ্যক লোকক উচ্ছেদ কৰা হয় Bhai, Very unfortunate. very unfortunate in the sense that poor people, instead of the government solving the problem of the people, they are multiplying the problems of the people. बहुत अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट पब्लिक के लिए अच्छाई के बजाय बर्बादी कर रही है ये खाली जो उच्छेद कर रहे हैं ये कम्युनल है हिंदुत्व एजेंडा ये कम्युनल एजेंडा है दुबुरी में सर सबसे बड़ा उच्छेद हुआ है लेकिन सांसद रत्नभूषण ने एक भी आवाज नहीं निकाला मुझे देखिए ऐसा है ना मैं कुछ लोगों के बारे में बोलना बंद कर दिया क्योंकि वो लोग इंसान है ही नहीं उनको बोलने का फायदा क्या है देखिए ये धुबरी में एमपी बने इतना हुआ धुबरी में क्या किया उसका नाम से एक स्टेटमेंट आया नहीं सर नहीं आया और आएगा भी नहीं क्योंकि वो तो सांसद बना ही किसी और मकसद के लिए किसी और मतलब के लिए एंड अनफॉर्चुनेटली हमें बड़ी उम्मीद थी राहुल गांधी जी से कि इस सांसद को गर्म करे दौड़ाए कुछ नहीं हो रहा है और अब तो मैं सोच रहा हूँ होगा भी नहीं थैंक यू